आज मैं इस 10 रुपए वाले कलर से खतरनाक वाली ड्राइंग बनाने वाला हूँ। आप इस इमेज को देख सकते हैं, ये कितना खतरनाक और कितने रियलिस्टिक है। आज मैं इसी को कंप्लीट करूंगा। आज तक मैंने कभी भी इतनी सस्ती वाली से ड्राइंग नहीं बना। आज मैं इस 10 रुपए वाली से एकदम रियलिस्टिक वाला बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो आउटलाइन है वो मैं परफेक्टली यहाँ पर इस पेपर पर कंप्लीट करता हूँ। तो चलिए म्यूजिक के साथ इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनली हमारा जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं कितना परफेक्ट है। अब मैं इस 10 रुपए वाले से मैं कलर करूंगा। तो इसमें टोटल इतना ही कलर दिया गया। इतने कलर का यूज करके मैं इसे रियलिस्टिक बनाकर दिखाऊंगा। अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मैंने अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर दी है। देखते हैं इस 10 रुपए वाले से किस हद तक रियलिस्टिक बनता है।
आप मेरी यहाँ तक ड्राइंग देख सकते हैं यार, कितना रियलिस्टिक बन रहा है। 10 रुपये वाले से भी मैंने इतनी रियलिस्टिक बनाऊंगा मैंने सोचा नहीं था। चलिए कंप्लीट इसको करते हैं। तो फाइनली हमारा 10 रुपये वाला चैलेंज कंप्लीट हो गया। मेरी पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक बनी है कि मैं क्या बताऊं। ये है इमेज और ये है मेरी 10 रुपया वाली पेंटिंग। देख सकते हैं यार कितना खतरनाक बना है। तो मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं कितना खतरनाक बना है। अगर आप चैलेंज देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं।